सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उसकी जो कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द insulator and the conductor. Okay, so the conductivity we can say it lies between the conductor and the insulator. Okay, means so it is not a purely conductor or a purely insulator. So based on the different condition it will be acts as a conductor and the insulator. Okay, so we are going to learn these concepts in detail. सो सपोज हम कंडक्टर देखते हैं. सो कंडक्टर क्या है? विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. और उसके टाइप्स क्या क्या है? जस्ट लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम. ओके, विच अलाउज करंट टू फ्लो इजीली. सो वी आर कॉलिंग इट इज ए कंडक्टर. एंड द इंसुलेटर क्या है कि जो करंट को इजीली पास होने नहीं देता थ्रू इट. सो सिंपली रबर है, ग्लास है, वुड है. सो विच डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट. So we are calling it is a insulator. But the semiconductors, we can say like silicon, germanium, okay, can act as a both. We can say depending on the different conditions. Means semiconductor वो act as a insulator भी करेगा, as a conductor भी करेगा. Okay, but it depends upon the different conditions. वो conditions क्या है कि depends upon the temperature. It depends upon the doping. Doping मतलब we are adding some impurities inside the semiconductor. Okay, so it is also depend upon that and applied external voltage. So semiconductor properties while acting as a insulator or a conductor, it depends upon mainly three properties. One is temperature, then doping, and the applied voltage. Okay, so any of the property we can consider for the semiconductor explanation. So key properties of the semiconductors are simply how conductivity controlled in the semiconductor. So their conductivity is mainly controlled by the doping. Okay, so doping is simply here. You can see here doping. Doping is nothing but एडिंग इम्प्योरिटीज इनसाइड इट. सो इम्प्योरिटीज हमने ऐड किए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग. ओके, सो कंडक्टिविटी हम चेंज करते हैं सेमीकंडक्टर की बाय एडिंग द डिफरेंट इम्प्योरिटीज. ओके, सो दैट प्रोसेस वी आर कॉलिंग इट इज ए डोपिंग. देन बाय द टेम्परेचर इफेक्ट. सपोज हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इन दैट केस ऑल्सो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो चेंज होती है. How it changes we'll see in the intrinsic semiconductor. Okay, so there is a one type of a semiconductor which is intrinsic semiconductor. We can say it is a pure semiconductor. Okay, so temperature effect, unlike metals, their conductivity increases with temperature. Okay, and there is a band gap. We can say inside the semiconductor, which is approximately 1 electron volt. Okay, so the band gap is basically between the valence band and the conduction band. बेसिकली एनर्जी बैंड जब हम कंसीडर करते हैं तब उसमें वैलेंस बैंड रहेगा, कंडक्शन बैंड रहेगा, देन द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी रहता है. बट यहाँ पे हम देखेंगे वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है या फिर गैप है विच इज़ वेरी स्मॉल वी कैन से, एंड वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट गैप वी आर कॉलिंग इट इज बैंड गैप. ओके, सो सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स हैं मेनली. सो वी आर सीइंग इनसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर सिंपली ए प्योर सेमीकंडक्टर वी कैन से. Okay, so the intrinsic semiconductors we can say it is a pure semiconductor. Okay, or a pure form of a semiconductor which is germanium or a silicon. So these are the two semiconductor materials, and in intrinsic semiconductor or a pure semiconductor, so the number of electrons here, the Ne is, we can say it is a number of electrons, and NH is nothing but a number of holes. So electron is having the negative charge and holes is having the positive charge. Okay, so the number of electrons and the number of holes in the intrinsic semiconductor having same value. Okay, or same
number of or a quantity. Okay. एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप है, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, so here the intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. We are not adding any impurity, but extrinsic semiconductor we can say it is a impure semiconductor. Okay, so we are adding the impurities inside it. So extrinsic semiconductor के दो टाइप्स है, एक है n टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज p टाइप सेमीकंडक्टर। तो n टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट impurities ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट मीन्स जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एंड इन p टाइप वी आर एडिंग ट्राइवैलेंट impurities। ट्राइवैलेंट मीन्स जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। Okay, 3 electrons are there. So pentavalent impurities are simply with the phosphorus, arsenic, then antimony, etc. Okay, so the elements or the which are having the 5 electrons in its valence band. Okay, and trivalent impurities we are considering with gallium, boron, indium, aluminium. Okay, so these are the trivalent impurity elements. So here we are calling it as a donor impurity, and here it is, sorry, yeah, here it is a donor one, and here we can say it is acceptor one. Okay, it is not a donor, it is acceptor one. Yeah, here is something wrong I have printed. So donor impurity is this. So how it is donor, we know that the germanium and the silicon is having 4 electrons in its valence band. Okay, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है उसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब वो एज अ कंडक्टर भी वर्क नहीं करेगा, एज ए इंसुलेटर भी वर्क नहीं करेगा मेनली। Okay, so here in pentavalent impurities we are having 5 electrons in the valence band। तो क्या होगा, यहाँ के जो 4 electrons है उसका बॉन्डिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। ओके, मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इन पेंटावलेंट impurities वी आर यूजिंग इट फॉर द कंडक्शन पर्पस। ओके, इट इज यूज फॉर द कंडक्शन वन। सो हियर why we are calling it as a donor one, because यहाँ पे एक extra electron बाकी है। okay, and which is being used for the conduction purpose, therefore it is a donor one, and we are calling it as number of electrons is greater than number of holes, because यहाँ पे electrons की value जो है ज़्यादा है। and in trivalent impurities, in trivalent impurities क्या होता है कि यहाँ पे 3 electrons है। okay, 3 electrons are there। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सपोज वी आर कंसीडरिंग इट इज सिलिकॉन। सो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन, एंड इन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा इन सेमीकंडक्टर, और मतलब यहाँ पे एक बॉन्डिंग नहीं होगा, विदाउट बॉन्ड रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा एक वैकेंट स्पेस के साथ, वी आर कॉलिंग इट इज अ होल। ओके, मतलब इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जो भी कंडक्शन होगा ऑफ अ करंट विच इज ड्यू टू द होल्स। ओके, इट इज ड्यू टू होल्स, सो वी आर कॉलिंग इट इज ए पॉजिटिव चार्ज। सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट पास होगा विच इज ड्यू टू होल्स, देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा है, देखो, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ट्राइवेलेंट impurities। Okay, so this is about the semiconductors।